Bitcoin is on the move, and everyone is asking, is the crash coming? या फिर ये another shakeout है? Let's dive in. Welcome to Bitcoin Baithak. मैं आपका होस्ट हूँ सदीम. उस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूँगा once again to decode the crypto trend. आज I'll try to break down the key area of potential BTC crash और आप अपने आप को कैसे prepare कर सकते हैं. Guys, this is a must-watch video, so hit that subscribe button and let's get it started. जैसा कि कल हमने वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज किया था बीटीसी को कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. यहाँ 3 ड्राइव पैटर्न फॉर्म हुआ था जो कि एक बेरिश पैटर्न था जो कि फॉर्म हुआ था. बीटीसी करंटली 94,000 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और EMA 50 की सपोर्ट ले रहा है. लेकिन यस्टरडे इसने एक रेड कैंडल फॉर्म की थी और आज भी मार्केट है वो नीचे की तरफ जा रही है और मार्केट इज क्रैशिंग. क्या ये नेक्स्ट टारगेट होगा या ये नेक्स्ट टारगेट होगा ये नेक्स्ट टारगेट होगा जो कि CME गैप को फॉर्म करेगा. लेट मी एक्सप्लेन यू कपल ऑफ थिंग्स राइट. सबसे पहले हमने कल मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था कि बिटकॉइन का और S&P 500 का. सो लेट्स गो इनटू S&P 500 चार्ट फॉर अ बिट ताकि यू सी व्हाट एग्जैक्टली हैपन. सो जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपन इज जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुई BTC ने एक रेड कैंडल फॉर्म की. So it's very important for you guys to keep an eye out on S&P 500 और Nasdaq पे भी as well. कि मार्केट कहाँ है किस तरफ जा रही है. तो जिस डायरेक्शन में S&P 500 जाएगा बिटकॉइन एक दिन के मे बी लैग आ सकता है लेकिन बिटकॉइन वुड इवेंचुअली फॉलो द सेम पैटर्न जो कि S&P 500 का होगा. और यहाँ जो मार्केट में S&P 500 ने जो क्रैश किया उसकी रीज़न है ये न्यूज़. Let me share it with you guys. So basically, and I'm going to summarize it क्योंकि ये more sort of a technical side पे है. So basically ये कह रहा है कि सारी मार्केट डाउन है क्योंकि Nvidia, Tesla और सारे जितने टेक स्टॉक जैसे कि Amazon हो गया वो सारे डाउन है. And as you see सारी मार्केट डाउन है इस वक्त. So Bitcoin rather वो नीचे की तरफ गिरेगा क्योंकि सारी मार्केटें डाउन है. और उसकी मेन रीज़न है यूएस की 10 years yield का जो कि हाई है. और बेसिकली इन अदर वर्ड्स लेट मी शो टू यू व्हाट एग्जैक्टली इज द मेन रीज़न. सो मेन रीज़न ये है कि जितने इन्वेस्टर हैं उन्होंने पैसे निकाले हैं टू बिकॉज इट्स अ हॉलीडे सीजन राइट. सो दिस इज द मेन रीज़न. हर कोई जब वो प्रॉफिट बनाएगा तो वो पैसे निकालेगा. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. तो इसकी वजह से सारी मार्केट डाउन है सारे टेक स्टॉक डाउन है एंड दैट्स एग्जैक्टली द रीज़न वाई BTC डाउन है. So you guys have to understand the relationship between tech stock, S&P 500, and BTC. So this is the main reason why market is going down. तो क्या जो ये level हैं ये valid हैं नहीं हैं, which is something we are going to understand. Another thing, इस chart को हम will leave it as is. इसको we'll come back to it later or maybe not, right? Currently we're gonna go into BTC USDT chart पे जहाँ कि I'm gonna show you कि sometime what happen is pattern के अंदर another pattern different pattern form होते हैं. So pattern within a pattern. So currently as you can see यहाँ पे एक classic head and shoulder फॉर्म हो रहा है जो कि अनदर बेरिश पैटर्न है. सो टेक्निकली इसका जो टारगेट होगा वो होगा ये इसका टारगेट है. तो यानी बिटकॉइन सेम एरियाज के अराउंड वो कर रहा है जो हमारा टेक्निकल टारगेट बनता है दैट वुड बी अराउंड $83,000. लेकिन रिमेंबर राइट हमारे पास इस एरिया में CME gap है which is something we discovered yesterday as well and I share it with you guys right. So ये हमारा CME gap है जो कि fair value gap है which would eventually fill हो सकता है लेकिन I don't think it's gonna play out and let me tell you why. तो I just wanted to show it to you sometime क्या होता है कि one pattern form हो उसके बाद the pattern completed another hidden pattern है bearish ये दिखा रहा है market would crash. Most of the people would do they would open short and they would get liquidated 100%. जो कि कल और इनफैक्ट नेक्स्ट वीक बिकॉज टुमारो इज द वीकेंड आई माइट क्रिएट अ वीडियो और आई माइट नॉट. सो इसलिए आई थॉट लाइक आई शेयर विद यू गाइस बिफोर यू हेड इनटू वीकेंड ताकि यू गाइस डोंट ओपन अप अ शॉर्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग मार्केट में हो क्या जा रहा है. सो व्हाट आई एम गोना डू आई एम गोना गेट रिड ऑफ ये सारी ड्राइंग्स पे सो आई कैन एक्सप्लेन टू यू गाइस. एंड वन थिंग आई एम गोना कीप इस एरिया को. सो जो 78,000 डॉलर के जो हमारा CME गैप है I'll keep it as is, right? And I'm going to highlight it CME gap. So
Let me share the market में हो क्या रहा है, so you guys understand. Remember this area, right? This is the area I wanted to share with you guys. Let me highlight it here. Now to understand यहाँ क्या हो रहा है, you have to go back, और ये मैं थोड़ा सा fix कर दूँ ताकि you guys understand कि ये वाला जो trend है, ये वाला जो channel है, इसमें market हो रही है. So to understand this, you have to go back to last year कि market में हुआ क्या था. So this is the key area, something you guys should understand कि market में हुआ क्या था इस area को. So remember EMA 50, ये EMA 50 है, this is EMA 200, जो कि BTC at that time was trading above EMA 50. So I'm gonna circle a couple of areas for you before I explain to you. So area 1, ये हम यहाँ move कर लेंगे. Another area as well. This is area 2, which I'm gonna mark it. Third point, ताकि आपको understand हो सके कि what exactly happened, right? So this is the area 3. So what happened is, and let me show it to you. So market में basically एक low से high लगाया, फिर market में इस channel में low लगाया, another low, एक fake out दिया, फिर नीचे की. So basically ऊपर की liquidity उठाई, market नीचे गई. Again we are on a daily time frame basis. तो ये नहीं हुआ कि it's a 4 hour or 1 hour time frame पे हम एनालाइज करें. मार्केट में लो लगाई, सबको बताया कि भाई मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ. Then it went up, ऊपर की तरफ गए, मार्केट ने बताया कि नहीं, I'm very very bullish. ऊपर के सारे लिक्विडेट किया जितनों ने शॉर्ट की थी. फिर मार्केट ने क्रैश किया नीचे की तरफ, तो जितनों ने लॉन्ग किया था मार्केट ने उनको लिक्विडेट किया एंड मार्केट वेंट अप, राइट? सो रिमेंबर, ये वाला मार्केट मैनिपुलेट होती है, मार्केट को लोगों को दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. ईएमए 50 के अबव बीटीसी करंटली ट्रेड कर रहा है. एक ऊपर की तरफ फेक आउट, एक ऊपर की तरफ फेक आउट, एक नीचे की तरफ फेक आउट. सो लेट मी शो यू द सिमिलर सिनेरियो. एक ऊपर की तरफ फेक आउट, इस पूरे एरिया को हाईलाइट कर सकते हैं कि ऊपर की लिक्विडिटी करेंगे. सेम थिंग हैपन हियर एज वेल. एक और लिक्विडिटी ग्रैब, ऊपर की तरफ फेक आउट किया लोगों ने, और व्हाट हैपन इज नीचे की तरफ फेक आउट है वो रहता है. तो लोगों ने what most of the people do, or what most of the people did, कि नीचे की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई, और लोगों ने यहाँ से लॉन्ग खोला तो शॉर्ट वाले लिक्विडेट हुए. यहाँ से मार्केट गई तो ये एक नीचे की तरफ गया, लोगों ने लॉन्ग खोल दिया था. सो व्हाट दे डिड, द मार्केट डिड, कि नीचे की तरफ किया, सारी नीचे की लिक्विडिटी उठाई, तो लॉन्ग वाले जो थे वो लिक्विडेट हुए. फिर मार्केट ने पंप किया तो शॉर्ट वाले लिक्विडेट हुए. देन मार्केट क्रैश अगेन, फिर ऊपर की तरफ गई, और अभी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो लॉन्ग वाले लिक्विडेट होंगे. और मार्केट ने सेम पैटर्न को प्ले करना है. मार्केट ने इस एरिया की तरफ, नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आना है, लेकिन उसने मे बी सीएमई गैप अभी फिल हो सके, विच आई डोंट थिंक इज गोना प्ले आउट. मार्केट में एक नीचे की तरफ फेक आउट देना है एंड मार्केट वुड गो अप, थोड़ा सा नीचे आएगी, एंड दिस इज हाउ द ट्रेंड इज गोना गो अप. सो करंटली मार्केट, दिस इज हाउ द होल सिनेरियो इज गोना प्ले आउट. मार्केट में इस वक्त बेरिश सेंटिमेंट दिए हुए कि नो आई एम बेरिश, लोगों ने शॉर्ट खोले हुए, एंड विच इज एग्जैक्टली व्हाट वुड हैपन. लोग, पीपल वुड थिंक कि ये सीएमई गैप फिल हो जाएगा, and it's not gonna fill. Like I said in my previous video, you have to look at, whenever we talk about BTC, right? You have to know your pattern, you have to know your history, कि what exactly happened last year, कि market ने किस तरीके से manipulate किया लोगों को, कि डराया, कि ऊपर की liquidity उठाई, नीचे की उठाई, और market ने fake out किया. क्योंकि yesterday, remember, right? Day before yesterday, market was green. लोगों को दिखाया कि नहीं, नीचे से हम बेरिश नहीं है, वी आर बुलिश अगेन. फिर मार्केट ने दोबारा से ऊपर जाके लॉन्ग वाले जितने लोगों ने शॉर्ट किया था उनको ऊपर करके मार्केट ने शॉर्ट लॉन्ग वाले को लिक्विडेट किया, फिर शॉर्ट वाले लिक्विडेट हुए, विच इज समथिंग व्हाट वी आर गोना डू. वी गोना लुक एट द नेक्स्ट थिंग अगेन, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली हैपन क्योंकि मार्केट इस वक्त लॉन्ग को लिक्विडेट करने में बिजी है. And same thing here as well, right? Last 24 hours में 168 million. If I remember it correctly, right? Yesterday भी ये same scenario था कि market में, yeah, in fact, between yesterday and today, nothing major has happened other than stock market or tech stock ऊपर
नीचे गए हैं, वरना अदरवाइज मार्केट would have gone up, right? Liquidity grab हुई है against, I don't know why these people would get liquidated, because they should know, right? $3 million, come on, they should never get liquidated. So remember, right? Play it smart, know your friend. Friend is always your friend, right? कि yesterday कल आए थे basically market में jobless claim, showcase slightly down as compared to the forecast, so which is a good thing, which is why it's in green. लेकिन compared to month over month, right, it was 220k, jobless claim हुए हैं 219k, forecast थी which is just 4,000 shy of the actual is 4,000 shy of a forecast, which is a good news but not so much of a good news, right? Because had this been, let's say, under 200,000, market would have become bullish. Bitcoin would have been skyrocketed and blah, 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 blah. So yeah, that's something you have to keep an eye out. Another major news I wanted to share with you guys. In fact, they have filed for the SEC ETF का, and ये another company just like MicroStrategy, which is BTC की adoption को वो कर रहा है. So another so much of a good news, right? So what we're gonna do, we're gonna go into Arkham and हम analyze करेंगे on. We're gonna do a bit of on-chain analysis कि, and we're gonna take a look at के market में हो क्या रहा है, किसने कितने Bitcoin accumulate किए हैं, because it was a holiday season. So we're gonna take a look at it. If I spell it correctly, yeah. Okay. So इस website पे you can currently do the on-chain analysis. What's going on with Bitfinex? Come on, show me its portfolio. Let me refresh the site for a bit. Sometime internet की वजह से हो जाता है, so let me refresh the website. So there you go, right? So Bitfinex pay, if you were to look at the inflow, let's load up, right? So we're going to take a look at the inflow, right? Basically, ये inflow and outflow, you can record everything कि Bitfinex क्या कर रहा है, किधर transfer कर रहा है. You can do on-chain analysis. Portfolio का archive को देते हैं. If you're going to compare इनके portfolio में compared to this period versus this period, right? So that's kind of week over week. आप यहाँ जाके changes कर सकते हैं. And I believe like this ये जो mainly change हुआ है is because of the BTC price, right? I think their holding was about 1,000 Bitcoin. तो उसमें लास्ट मंथ पे डिपॉजिट हुए इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, और कुछ आउटफ्लोज भी हैं. सो रिमेंबर, राइट, हमेशा ये नहीं होगा कि इनफ्लोज होंगे, आउटफ्लोज यूएसडीटी के हैं, TRX coin के, and all those sort of a thing, and you would see some transfer between this wallet versus another wallet, right? Another thing that I wanted to take a look at is MicroStrategy के did they buy any Bitcoin or anything at all, which I don't think they did because of the holiday season, but you never know, right? Inflows, no outflows. So last on chain जो कि transaction हुई थी into their wallet was 2 months ago. Let's take a look at BlackRock. And I think if I remember correctly, BlackRock ने अपने portfolio में change आया है about $1 billion. So yeah, BlackRock ने अपने BTC की some holding sell की है, which is pretty normal, right? Again, this is a holiday season. Most of the people, they wanted to take some cash, enjoy, go away on a holiday. And remember, right, Bitcoin is gonna नीचे आएगा, they might buy it back again. So it's not like, as in, it's not a big thing. That holding was about $57 billion, $56 billion. So they chill out some 300 BTC here and there. Just a day ago, 4 days ago, a week ago, उन्होंने USDC को buy किया था. Inflow क्या था? Let's take a look at the inflow as well. So yeah, ये gas fees है for the BTC, which is something I'm going to ignore. इसके अलावा not so much. उन्होंने last time a week ago they bought some BTC and Ethereum as well. Another thing I wanted to show to you is अगर आप if you're interested, basically आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ Vitalik की, how do you spell Vitalik? Vitalik
आप यहाँ विटालिक की भी होल्डिंग देख सकते हैं BTC में, रिस्पन विटालिक, विटालिक इथेरियम के जो फाउंडर है, here you go buddy। तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि यू कैन सी इस ऑन चेन ट्रांजैक्शन राइट, कि इसकी राइट, इसने करंटली ट्रांजैक्शन की है, ऑल द ट्रांजैक्शन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज एंड एवरीथिंग राइट, कि इसके वॉलेट में कितना चेंज आया, क्या हुआ। You can do all the on-chain analysis through this website, right? इसके portfolio में about $20 million, maybe he went out for a coffee or something, $20 million इसकी वो ही, last week इसकी थी holding about 800 something $1,000, which went down a bit, by $20 million। So वितालिक भैया ने कुछ buy किया है USDC 3 days ago, outflow हुआ है, inflow हुआ है, of जो भी है। So basically what you could do, right? आप यहाँ alert, you can create an alert, so whatever Vitalik is buying, that's something you guys can also buy, right? This is the easiest way to know, okay, what's the big fish are doing in the market। Uniswap से इसने कुछ swap किया है for about 60 USDC का, I don't know, could be NFT, could be whatever। Vitalik bhaiya hai, he's currently enjoying his time, right? So these are things that you guys should know, right? So currently next हम देखते हैं crypto bubbles पे what exactly happened in the market। Let me refresh it। So on again we are on daily time frame, certain coins green है, certain coins red है, which kind of shows including, so the biggest pump that we saw is in virtual, जो कि AI token है, BGB, which is outperforming in the market currently and is going crazy, right? So it went up to $7. Oh wow. I remember the time, yeah, currently a couple of months ago, in fact, if you were to go a month ago, right, you would be surprised it was trading around $1 something। Now it's an all-time high लगाए $8 something पे, and it's currently down by $1 because everything is down, right? So there are tons and tons of opportunities that you guys can buy in the market। Hourly time frame पे देखते हैं, we're gonna see कि भाई hourly time frame पे क्या हो रहा है। So most of the coins are in green, जो कि show हो रहा है कि BTC की dominance जो है वो increase हो रही है, decrease हो रही है in fact rather, or some of the coins जो कि still pump नहीं हो सके हैं। And on an hourly basis पे I would say कि BTC की dominance जो है वो increase हो रही है। So let's take a look next into BTC। So yeah, remember, right? It's going to be a fake out. Market dive करेगी certainly about this sort of area, 88,000, 87, 89,000 इससे नीचे market नहीं जाती। These are my analysis. And let's take a look at the USDT की dominance पे। USDT की dominance को I'm going to take a look at on a 4-hour basis पे कि dominance इसकी क्या कर रही है। So in fact अगर go on a weekly basis to always start, मैं अपना starting point हमेशा weekly basis पे रखता हूँ, so I kind of get the whole picture। ये वाला area जो है is a key area for me, यहाँ से double bottom बनेगा इसका, and something I'm gonna keep an eye out daily time frame पे। lesson नवाज है क्या हो रहा है 4-hour की basis पे। What do we see? Do we see any pattern? Do we see anything hidden कि market में currently क्या हो रहा है? So उसकी dominance जो है slightly increase हो रही है, rejection मिल रही है इसको यहाँ से। EMA 50 की इसने support ली हुई है already। Bitcoin की dominance को देखते हैं। So dominance इसकी, yesterday this was the pattern that we drew। So I told you, right, BTC की dominance is not going to go to that crazy 64%, no, eventually not। थोड़ी सी ऊपर होगी eventually in next couple of days, but currently ये downward trend की तरफ है। BTC dominance is gonna come down to, in fact, let's start off with this। I'm gonna get rid of the chart and all the drawings, right? So you guys can see, right? I'm gonna get rid of this little pattern। So basically to me this is the key support area कि यहाँ जो है this area is something I'm going to keep an eye out कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन eventually the main key area for me is this area, right? BTC की dominance इस level पे drop होगी तो you're gonna see a crazy pump in the altcoin। उसके बारे में मैं I'm gonna create a separate video around
altcoin. And one important thing I wanted to show to you, and why the reason why I'm gonna say like ये pump होगा, ये सारी चीजें होंगी, because let me show you something important, right? Total market cap. Yesterday हमने analyze किया था BTC को on a weekly time frame basis पे. So अगर आपको दिखे तो if you were to see currently हम total market cap पे जो कि Bitcoin को increase करता है, I'm gonna get rid of this guy. So we're gonna do what we're gonna do. We're gonna do the same thing. Weekly time frame basis पे आ गए हम. In fact, let's start off with the daily time frame. Daily time frame पे क्या हो रहा है? Daily time frame पे इसने EMA 50 की support से rejection ले रहा है. I'm gonna go to weekly time frame and I wanted to show to you a couple of things, right? Just like what we did yesterday, we're gonna do the same thing, right? So you guys can understand Bitcoin में why I'm saying कि Bitcoin में pump आना है and market is not gonna crash, right? So we are back now. Sorry, my trading view got stuck for some reason. So yeah, again हम total chart पे हैं and on a weekly time frame basis. And I wanted to show you something, right? So you guys know, right? Market में लोग आवाज लगाते हैं जैसे dip आता है, buy the dip, buy the dip, buy the dip. No. Smart trader और investor में यही फर्क है कि what they do, they buy the dip at the right time, right? So what I wanted to show to you is important thing. Again, we are doing the same thing what we did yesterday. We're gonna fix this trend line, right? इसको मैं थोड़ा सा वो करूँगा squeeze. So you guys can plan your trade accordingly, which is a very smart thing to do, right? इसकी trend line को fix किया slightly. So this is the trend line. So based on this trend line, as you can see, कि more money would come in eventually. इसका जो total market cap है cryptocurrency का currently around $3.2 trillion, which would go down to this level as well eventually in the next couple of months. So Bitcoin का all time in making is coming, guys. So if I were you, which is exactly what I'm gonna do, मैं क्या करूँगा? And again, this is my strategy, something you guys can copy as well. Basically, I'm not going to buy any dips right now. Market में, even though there are some good opportunities around there as well. मैं इस area का wait करूँगा for the BTC and everything to dip in. जब ये मेरा buy area, this is my buying area. So मैं इस यहाँ पे अपने ऑर्डर बुक पे लगा के छोड़ दूंगा. The minute it comes in, market इस प्राइस पॉइंट पे आएगी, I'm gonna buy the dip here. और यहाँ से मैं अपनी लॉन्ग खोलूंगा and I'm gonna do couple of spots trading here at this point, जबकि मेरे लिए मार्केट का परफेक्ट स्ट्रेटजी होगी to buy the dip here. मैं इस एरिया पे नहीं बाय करूंगा, मैं शॉर्ट नहीं खोलूंगा. I'm gonna open a long जैसे ही मार्केट इस एरिया में रीच होगी. This is my strategy based on my analysis. You guys are feel free to copy what do you think is right based on my analysis. और या आप अपने जो strategies हैं वो comment में मेरे साथ share कर सकते हैं कि what do you guys think. कि based on my analysis, like I said, total free market would go up to as high as this much. So in the next couple of months, so yeah, all of us would make ton of profit. These are my 2 cents. And I'm gonna create a separate video on altcoins के altcoin make up pump आएगा, कैसे pump आएगा. I'm gonna make a separate video around that. So guys, remember, trade smart. जो आइडियल ट्रेडर होता है वो ये नहीं करता कि थोड़ी सी मार्केट गई, यहाँ से बाय कर लिया, देन यहाँ से बाय कर लिया. नो, मार्केट एक समंदर है, यहाँ टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं एंड यू आर हेयर टू फिश, राइट? इस एरियाज में जैसे ही डिप आएगा मार्केट का, which is gonna come, right, in next couple of days. Like I said, it's a holiday season, volume huge नहीं होगा, and weekend has already started, so market would dip eventually to this level. The minute it would get down to this level, मैं अपने long open कर लूँगा and market would go eventually higher from here. So I hope to see you in the next video. Feel free to comment and let me know what exactly you guys are doing, कि आपके trades क्या हैं और क्या सारी चीज़ें. I'll see you in the next video. Thank you.